I welcome you all in this interactive session today. As Dr. Najam has already explained the procedure of applying for an RPU, I will highlight certain strategies that will help you to make your research proposal successful. So first of all, we need to understand the landscape of the research grant that where we are applying. So in this case, because this session is particularly about an RPU, but we can still understand the landscape of the grant. Is it from the government, private, institutional or international? So next we need to consider identifying the right funding opportunity. And next, understanding funders' priorities and requirements. That is one of the key criteria in an RPU that we have already highlighted in the first session today. कि कौन सी priority areas क्या है, requirements क्या हैं that you need to consider while you are preparing your proposal. So these are the certain key elements that we need to consider while we are preparing our research proposal. The first of all, executive summary. I will share the detail of all these headings later. Problem statement, goals and objectives of research, methodology, budget and justification, expected outcomes and impact. And now we will go into the detail of these key headings. Project digest or the executive summary is the first part of your research proposal after the title. So you have to take into account what you are going to pitch in this project. उसको सबसे पहले आपने highlight करना है. So these are the little part of the project. एक summary होगी. It can be 500 words. It can be in 3 parts, 3 small paragraphs, and you need to highlight that what you are going to do in your research. So what is your research problem, where you are going to focus, and then what will be the solution of that problem, and what will be the impact of that project on the audience. So यहाँ पे this is the key area, and in most of the cases the reviewers, the authorities, they hardly go through the whole plan. So there are certain areas of your research projects जो पढ़े जाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि they will start from the beginning and they go until the end of your project. So इसलिए ये जो executive summary है या project digest है, this is extremely important to strike your project. तो इसलिए इस पे आपने सबसे ज़्यादा focus करना है. So normally this is based on key 3 areas. Start with the problem you want to solve and describe it honestly and urgently. Urgently means that you need to prove the need of that problem, why this is important to study and why you are highlighting this problem in your research project. And next you need to describe the solution of that problem. You need to highlight that why it is unique and how you will achieve this. How you will achieve this is relevant to the research methodology. And then the goal of the executive summary is to give senior leaders an understanding of the proposal without having to read the full documents and entice those with more day-to-day responsibilities to choose which project to fund read on more detail. So I have already mentioned that it's not necessary that they will read your proposal, but they will definitely go through your executive summary. So useful tip इसके लिए क्या है कि you need to avoid the jargon, or you need to write it in a very formal and clear manner. You don't need to use a very difficult vocabulary or scientific vocabulary. It has to be like this. A layman should understand what your project is about. The next heading is writing a compelling problem statement. So in problem statement, again we have 3 paragraphs. So the first paragraph will tell the need of the project and why you are focusing on this problem, and this is actually the most important part of your research proposal. अब हम ये देखें कि हम formally यहाँ से research proposal को start करने लगे. अब यहाँ पे जो सबसे जिस चीज़ के ऊपर आप build कर रहे हैं, this is the main thing where you are going to build your whole research project. So you need to focus on. So there should be a crisp in your research problem. Why this is important, and you have to prove it like this is the most important problem on this earth. So this is how you can attract your evaluator towards your problem. So one of the most important parts of the grant proposal structure is the problem statement, also known as a need statement or statement of need as well. ये भी इसका दूसरा नाम है. You may have to do
extensive research on the history of the underlying problem, including previous solutions that were implemented and potentially failed. So while you are selecting a research problem, you have to read a lot about your research problem, what were the solutions in response to this problem, और वो क्यों फेल हुए या क्यों वो सक्सेसफुल हुए, what were the gaps in those solutions, या what were the gaps still you need to take into account in planning your research. So this is again very important कि आपको अपने प्रॉब्लम के सारे पर्सपेक्टिव्स जो हैं you must go into the depth of all the perspectives के क्या क्या चीज़ें हैं जो मेरे रिसर्च प्रॉब्लम से रेलिवेंट हैं. जब भी हम कहीं पे जाते हैं किसी प्रपोजल के साथ, we need to prove ourselves that we are the right person who know each and everything about this problem. And then you should explain why your solution will make a difference. So this is very important. Again, you have to highlight the importance of the solution. And you also need to bring innovation in while preparing your solution. There is a chance that these kind of solutions are already available in the literature, already published in the articles, but you need to bring innovation in conducting that research and then bringing innovation into developing the solution of that problem. So methodology ho ya solution development ho, you need to bring innovation in your research proposal so that you can differentiate among other applicants. In a winning grant proposal, the problem statement will heavily rely on qualitative data and clearly display how your organization answer a need. Quantitative. So that means that you need to present certain records, certain numbers about that particular solution, about that particular problem. जिस तरह से हम ये कहते हैं कि इतने % ये हुआ, इतनी रिसर्च ने ये बताया, तो इस तरह से these can be the examples of that will show कि आप इसके बारे में जानते हैं. So we can categorize in 3 parts. Display relevant existing data. That will be the first paragraph of your problem statement. And next you will highlight the urgency of that problem. That why you are focusing on this particular problem in your research proposal. And then the last part of your problem statement would be focus on the main problem. This means that what you are going to do in your research proposal, considering the earlier first and second point, you will focus on the third. If your goals are clear, your proposal is clear. If your goals are not clear, no one can understand that what you are going to do in this research proposal. So it has to be clearly stated and it has to be smart as well. Goals जो है वो एक broad statement है. आपका aim और goal जो है that can be one, that is a broader one, and then we convert it into objectives. Objectives can be more than one. It has to be smart, specific, measurable, attainable, realistic, and time bound. And believe me, this is a strategy where you can pitch your research project. If your objectives are clear, everything is clear in your objectives. If your objectives are vague or very broad, not time bound, then you can be in problem. Then connect your goals and objectives to the audience. Those who are going to participate in your research proposal, your research participants, respondents, उनके साथ आपने उसको connect करना है. So that means that your objectives will have to be specific. The next key heading is methodology in your research proposal. So you need to devise certain strategies to achieve those goals. अब इसके लिए आप quantitative, qualitative, mixed method, ये सारी जो हैं ये आपकी research की methodologies हो सकती हैं. But whatever you are going to state in your research proposal in the methodology section, that has to be linked with your research objectives, ताकि एक जो synchronization है वो पता हो कि ये वाला जो objective है ये इस strategy के through हम इसको meet करेंगे. फिर you need to define clearly that how you will collect data, who will be the participants, what will be their characteristics, and how you will collect data from them. So this is again very important. We can say the participants from the universities. So we have so many stakeholders in the universities. Who will be the participants? So it should not be vague. It should be very clear that who will be the participants, what will be their criteria to participate in that research, और उनकी characteristics जो हैं वो क्या होंगी. Then in many cases we conduct surveys, quantitative surveys, qualitative surveys, experiments, interviews. These are the strategies that will help us to collect the data from the participants. Then
in the last part of the methodology, we need to highlight that how we will do the analysis. So first we will collect data and how we will do the analysis of the collected data. So we have to mention certain strategies for data analysis. अक्सर मेरे जो रिसर्च प्रोजेक्ट्स देखे हैं, आई एम ऑल्सो रिव्यूइंग रिसर्च प्रपोजल्स, उसमें हम क्या होता है कि हम ये तो बताते हैं कि ये हमारे पार्टिसिपेंट्स होंगे, ये टूल्स होंगे, ये डेटा होगा, लेकिन वी लेफ्ट दैट स्पेस ब्लैंक, जिसमें हम ये मेंशन नहीं करते कि डेटा एनालाइज कैसे होगा. बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द टाइम वी थॉट के व्हेन वी विल हैव डेटा वी विल प्लान द स्ट्रेटजी कि इसको एनालिसिस कैसे करना. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी नीड टू हैव data analysis strategy in our mind that how we will do the analysis. जब हम रिसर्च में क्लास में टीच भी कर रहे होते हैं या रिसर्च प्रपोजल के बारे में हम स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, दिस इज वन ऑफ द की क्राइटेरिया दैट यू मस्ट हैव द होल प्लान इन योर माइंड व्हाइल यू आर प्लानिंग योर रिसर्च. तो ये सारी चीज़ें जो हैं, दिस विल tells the reviewer that you are clear about your research plan, that what you are going to do and what you are going to achieve through your research objectives. Then again I will highlight the word innovative. You have to be innovative because this is a word that can distinguish your project among other projects. If you are repeating the same thing again and again, which is already available in the literature, the earlier research already highlighted that, so then there is no use of conducting research. So you need to bring not only the innovation in your title, methodology, but you also have to bring innovation in your data analysis as well. So that means if the earlier research is using the basic data analysis strategies, you have to go for the advanced data analysis strategies. And then the most important thing, you need to take into account the ethical concerns while you are conducting research. So you need to ensure the compliance of ethical guidelines. For example, taking consent from the participants when they are participating in your research. You need to ensure the confidentiality and anonymity in research. And you need to mention in your research proposal that you are going to pay attention to these things. And then you also need to highlight that if there is a kind of sensitive data in your research, you also need to devise strategies for that how you will handle such data and how you will secure your data in future even after research. So that is also equally important. Now, budget and justification, the most important part of any research grant. In the second stage, they will be asking you to give the complete detail about the project budget. So this means you have to think very critically and rationally. You need to give certain reasons that why you are requiring funds for that. प्रॉपर आप उसके लिए एक रीजन देंगे एंड हाउ यू विल यूटिलाइज दोज फंड्स, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर बजटरी स्टेटमेंट्स. इसको हम देख लेते हैं. और इसमें एक जो इम्पॉर्टेंट बात है, वी हैव 20 मिलियन इन NRPU ग्रांट, सो इट्स नॉट नेसेसरी कि आप 20 के करीब जाएं या 20 तक जाएं. समटाइम वी कोट द बजट वेरी हाई एंड विच अल्टीमेटली हमें ले जाता है टूवर्ड्स रिजेक्शन. एंड इन सम ऑफ द केसेस लोग क्या करते हैं कि दे डू अंडर कोटिंग. बजट को इतना नीचे बताते हैं कि शायद जो बजट है हमारा जो प्रोजेक्ट है वो इसी की बेसिस पे अट्रैक्ट हो जाए, बट दिस इज नॉट द केस. यू हैव टू गिव द बजट फिगर वेरी रैशनली कि आप किस तरह से बजट इस प्रोजेक्ट के लिए जो आपने वहाँ पे बताया है उसके लिए कैसे फंड्स को यूटिलाइज करेंगे, कितने पैसे रिक्वायर्ड हैं. You need to give a solid figure जो आपकी रिसर्च प्रपोजल को सपोर्ट भी कर रहा हो. So वो एक आइडियल बजट हो सकता है. उसको हाई कोर्ट पे लेके जाना या उसको लो कोर्ट पे लेके जाना जो है वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा. So this means that you have to be very diligent and practical while you are planning for your budget. So start by breaking down the cost for your period. तो आप उसका ब्रेकडाउन बना लेंगे. You should not just list the prices. Instead, you should link each expense directly to a part of your project कि किस तरह से ये उसमें यूजफुल होने वाला है. You need to give reason for everything. Break down your budget into employee salaries, materials, equipments, and anything else you need in your research project. Be detailed as this shows that you understand what your project requires. For each expense, explain why it is needed and how it contributes to the success of your project. Again, state how you will manage the funds.
ये फिर से एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, यूजुअली दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आवर रिसर्च प्रपोजल। अब दुनिया में अब ऐसी कॉल्स आने लगे हैं जो कि करैक्टर्स पे और वर्ड्स पे बेस करती है। So when there is a limitation of words, it's very difficult to be in that limit. तो इसमें होता ये है कि if you find certain space, do mention कि how you are going to manage the record of your funds. This will show कि आप कितने organized हैं, आप कितने sincere हैं, and you are clear about the funding and budgeting कि किस तरह से हमने एक project को manage करना है. And this is one of the key characteristic of a good researcher कि वो अपने projects को manage कैसे करता है। तो इसमें ये फंड्स को मैनेज आपने कैसे करना है, इफ यू गेट सर्टेन वर्ड्स अवेलेबल इन योर प्रोजेक्ट कॉल, तो आप वहाँ पे ये बता सकते हैं कि इनका रिकॉर्ड को आप कैसे मैनेज करें। इम्पैक्ट एंड द डिसमिनेशन प्लान, सो एक्चुअली दीज आर लिंक्ड विद ईच अदर। डिसमिनेशन प्लान मीन्स द इम्पैक्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन द ऑडियंस, कि उसकी ऑडियंस कौन है, कहाँ कहाँ पे उसका इम्पैक्ट आएगा। सो यू नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट द एक्सपेक्टेड आउटकम्स, एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम्स ऑफ कोर्स इज अगेन रेलिवेंट टू योर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। तो जब आप उसको मीट कर लेंगे देन यू विल सी कि इम्पैक्ट उसका क्या है, एंड नाउ यू नीड टू एक्सप्लोर द एवेन्यूज ऑफ दैट इम्पैक्ट कि ये किस किस पे जाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है विद द लिमिटेड अप्रोच कि इफ आई एम कंडक्टिंग रिसर्च विद माय स्टूडेंट्स, सो आई विल ओनली सी माय स्टूडेंट्स एट कि इनके ऊपर क्या चेंज आया, हाउ मच दे आर चेंज, या उनकी अगर परफॉर्मेंस है, so what is the difference in their performance before and after the research. So this is not the only impact is actually broader. So अगर हम इन्हीं students की बात करें, when they will be graduated, they will go to the market, they will get jobs, so of course they are carrying those impact with them. तो अब ये जो impact है ये long term basis पे हमने देखना है कि हमारी research से क्या क्या impact होने जा रहा है, और दूसरी साइड का इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो थियोरेटिकल पार्ट है उसके ऊपर भी हो सकता है, थ्योरी डेवलपमेंट के अंदर भी हो सकता है, लिटरेचर के अंदर भी हो सकता है। इस तरह के इम्पैक्ट को भी हमें देखना है। तो इम्पैक्ट जो है दैट इज वेरी क्रिटिकल, इट डेमोन्स्ट्रेट्स द टेंजिबल रिजल्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट एंड हाउ इट कंट्रीब्यूट्स टू ब्रॉडर गोल्स, वो गोल जो हमने प्रोजेक्ट के स्टार्ट में डिवाइस किया था उसकी लाइफ में भी हम इसको देखें। अब हमने ये बताना है कि आप इसमें अगर कुछ नोट्स देखेंगे इंटरनेट पे या इस तरह के सोर्सेज, लर्निंग सोर्सेज देखेंगे कि आप एक सक्सेसफुल ग्रांट राइटिंग कैसे कर सकते हैं, तो यू विल सी कि वहाँ पे कुछ कीवर्ड्स आपको बार बार पॉपअप हो रहे हैं। उनमें से एक तो ये होगा रिसर्च रिसर्च रिसर्च, एक ये होगा रीड रीड रीड, और फिर ये होगा कि हाउ सक्सेस विल लुक लाइक द इम्पैक्ट। तो अगर आप यहाँ पे इम्पैक्ट देख रहे हैं दैट मीन्स के पीपल आर नॉट इंटरेस्टेड इन योर प्रोजेक्ट। अगर आप इम्पैक्ट को वहां पे देख रहे हैं, दूर तक देख रहे हैं, तो दैट मीन्स के यू आर डूइंग समथिंग वेरी इनोवेटिव, डूइंग समथिंग वेरी ग्रेट, so then reviewers will be more interested in your research project. Otherwise जो एक शॉर्ट टर्म का इम्पैक्ट है उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा ह्यूज फंड्स नहीं मिलने वाले। तो हमने इम्पैक्ट को एक लार्जर स्केल पे जाके देखना है, लार्जर ऑडियंस पे देखना है, और हमने थ्रू वर्ड्स उसको मेंशन करना है कि ये किस तरह से नजर आएगा हमारे प्रोजेक्ट में। देन द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज अलाइन आउटकम्स विद द फंडर प्रायोरिटीज। ये काइंड ऑफ अट्रैक्शन है न्यू प्रोजेक्ट, दैट विल टेल के ये हम डिमांड कर रहे थे और ये जो प्रपोजल हमारे पास आए हैं दे आर ऑल्सो इनकी रिसर्च से यही चीज़ हमें मिलेगी। तो दैट इज वन ऑफ द की होगी आपके प्रोजेक्ट की जो उनको अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स सक्सेस। देन यूज मेजरेबल इंडिकेटर्स, जैसे हमने ऑब्जेक्टिव्स के अंदर डिजाइन किया था कि ऑब्जेक्टिव्स मेजरेबल हैं, यू कैन यूज दोज इंडिकेटर्स टू मेंशन द इम्पैक्ट ऑफ द research. Then again show how your work will create meaningful change, discuss its contribution to academic knowledge, policy and societal needs. फिर वही बात है कि आपने दूर तक उस इम्पैक्ट को देखना है कि कहाँ कहाँ पे मेरा जो रिसर्च प्रोजेक्ट है उसका इम्पैक्ट आ सकता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपने जब आप प्रोजेक्ट कॉल को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे ये लिखा होगा कि ये किस चीज़ को हाईलाइट कर रही है। इन आर केस NRPU, ये जितने भी रिसर्च कॉल्स आ रही हैं दैट इज मेनली एक्चुअली लिंकिंग विद SDGs, या जो भी उस कॉल का प्रायोरिटी है उसके साथ आपने अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स को और आपके आउटकम्स जो हैं उसको लिंक करना है।
So provide a realistic timeline for outcomes. If it is not realistic, no one would be interested in that, क्योंकि end होना चाहिए project का कि यहाँ से आप start करें, यहाँ पे शुरू कर रहे हैं, timeline should be there so that a reader should know कि कहाँ पे आपका project जो है ये end होगा. Highlight scalability and sustainability. This is very important in project perspective. Once you have done with your research project, इसके बाद क्या होगा, उसकी scalability के options क्या हैं, उसकी sustainability के options क्या हैं, क्या वो फंडिंग के बगैर सर्वाइव कर सकते हैं, do you need more funds for the sustainability of the project. तो ये इस एंड से भी आपने सोचना है. Those projects who are focusing on these points will have high chances for winning. And next, the team के प्रोजेक्ट के अंदर कौन लोग काम करेंगे, द पीआई कंसोर्शिया, जो भी लोग, जिन लोगों को भी आप इनवाइट करेंगे, इंडस्ट्री ये एक आउटसाइड पार्टनर है, बट देयर कैन बी पार्टनर्स फ्रॉम योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल. यू हैव टू गिव अ रिकॉर्ड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज वेल कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी ऑर्गेनाइज है. इसी तरह से द पर्सन हु इज गोइंग टू कोलैबोरेट इन योर रिसर्च, हिज प्रोफाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो शख्स किस तरह का है, क्या उसने पहले कोई रिसर्च प्रोजेक्ट्स किए हैं, is he aware of the project calls, क्या उसके पास certain skills हैं to manage a project, या the role you are expecting from that particular person, is he capable of doing that. तो ये सारा जो प्रोफाइल है ये लेटेस्ट स्टेज पे, जब हम सेकंड स्टेज पे जाएंगे, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किस क्राइटेरिया पे आपने उसको कॉपी है. अब हमारा चूंकि सोशल सिस्टम ऐसा है कि मैं कर रही हूँ तो ये मेरा दोस्त जो है ये मेरा कॉपी आई है, सो दैट इज नॉट वर्केबल एनीमोर. यू नीड टू डिफाइन द रोल ऑफ दैट पर्सन, व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट इन योर रिसर्च. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल राइटिंग दिस सेक्शन एज वेल, because this is the last section sometime in research calls, but still we have to pay attention कि यहाँ पे टीम आपकी contribute कर रही है, their role, their expertise and skills are equally important as yours. Then there are certain key strategies: tailoring proposals to funders' interest, demonstrating innovation and significance, collaborating for interdisciplinary strength. इसके बारे में भी हमने बात की. Either it is mentioned in the research call or not. आपको एक डायरेक्शन जरूर दिखानी है कि it is interdisciplinary. जरूरी नहीं है कि वो आपसे कह रहे, लेकिन अगर आप इसको शो करेंगे तो that will enhance the strength of your project कि आप इस एंड पे भी सोच रहे हैं. Building a strong team and institutional support, जिसकी अभी हमने बात की. Writing a compelling narrative with clarity and precision. It's not necessary to use difficult vocabulary, और आपको precision और clarity के साथ जाना है. अब you see कि आपने proposal के अंदर देखा कि there are limitation of certain words. अब इन्हीं 500 words के अंदर रहते हुए you need to attract the reviewer that your research idea is very important. Your research idea is very thrilling. तो अब आपको clarity और precision अगर आपकी writing के अंदर नहीं है तो then you would not be able to attract your reviewer. Then presenting preliminary data or pilot studies if applicable, ये आपकी research को और enhance करेगी. That means कि you are already working on that, you have a baseline with you, this will help you to secure the grant. Here, because it's very theoretical today, we are just talking. So then 5 hours from the books, that is very important for grant writing. Read carefully, review the grant guidelines and the requirements. Research, understanding the funding organization's missions and priorities. Reflect, align your proposal with both your goals and the funder's objectives. ये वो चीज़ है जो आपको हर रोज करनी है while you are working on your research proposal. Until the day of submission, you need to every day reflect on your proposal कि किस तरह से हम align है और किस तरह से हम जो call है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं. Write clearly and concisely communicate your project plan and impact. Revise, edit and refine your proposal to ensure clarity and adherence to guidelines. There is a phenomena with all of us कि once we have done with something, we think this is the best document in this world and we never go back for revisions. तो ये reflect और revise को मैं connect कर रही हूँ यहाँ पे. This is very important कि आप चीज़ों को जब रिफ्लेक्ट करते हैं only then you can revise it. If you are not reflecting, then you cannot revise it. And believe me, reflection helps you in making sound revisions. और जितनी ज़्यादा रिवीजन किसी चीज़ की करेंगे वो उतना ही डॉक्यूमेंट जो है वो आपका अच्छा होगा और वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाए. Common mistakes that we need to avoid while we are preparing our research proposal.
lack of alignment with funders' objective, overly ambition or vague proposals, weak budget planning, poorly written and unstructured proposals, ignoring feedback and resubmission strategies. ये वो चीज़ें हैं जो कि हमें avoid करनी चाहिए while we are writing the draft. Thank you very much for your attention and time.